वेलकम स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में आपको दिया है डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स ए बी बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स बी सी सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। सो ये जो डिटरमिनेंट है दिस इज डिविजिबल बाय ऑप्शंस आर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो ये जो एक्सप्रेशन है किस फैक्टर से डिविजिबल है, दैट्स व्हाट यू नीड टू आंसर, दैट्स व्हाट वी नीड टू फाइंड। So let us try to simplify this. Simplify करेंगे. So what I do is यहाँ a square, so I'll try to convert these two into a squares. So आपको एक स्टैंडर्ड टेक्निक है AB AC BC को a square B square C square में कन्वर्ट करने के लिए स्टैंडर्ड टेक्निक is this. So what I do is I'll multiply the first row with A, I'll multiply the second row with B, I'll multiply the third row with C. So if I multiply first row with A, second row with B, third row with C, the delta will become ABC times more than the real delta. सही? So मैं क्या करता हूँ ABC से divide करके I'll divide with ABC and I'll multiply the determinant with ABC. Something like A cube into 1 plus X, A square B, A square C. Similarly second row को B से multiply किया था AB square B cube into 1 plus X, B square C. I'll multiply the third row with C, AC square, BC square and C cube into 1 plus X. So effectively first row को A से, second row को B से, third row को C से multiply किया तो delta will be multiplied with ABC. So मैं बाहर divide भी कर दिया. So that is equal to. So now what I do is I'll take A as common from the first column, row wise multiply किया, column wise common लेता हूँ, second column से B common लेता हूँ, third column से C common लेता हूँ. So what happens? So ABC बाहर आएगा, so ABC by ABC into delta of first column से A common लिया था, what is left out? A square into 1 plus X. वापस आगे यहाँ B square C square, second column से B common ले लीजिए, you get A square B square into 1 plus X and C square. From the third column, take C as common. So A square B square C square into 1 plus X. So first क्या किया? This is a very standard technique which you can use very often. Row wise A B C से multiply किया, column wise A B C common लिया. So difference क्या आ गया देखें? Diagonal elements में कुछ difference नहीं है. Diagonal elements will not change by this operation. So non-diagonal elements जो A B A C हैं, those has become A square and A square. बाकी जो भी हैं, they have become squares. ठीक है? Similar operation आप अगर squares को A B A C में convert करना है तो भी reverse process कर सकते हैं. ठीक है? So now what I do is that is equal to this A B C and A B C gets cancelled. Now what I do is let us do some column operations. So what I do is C2 tends to C2 minus C1 and C3 also tends to C3 minus C1. C2 से C1 minus करेंगे, C3 से भी C1 minus करेंगे. ठीक है? So what will remain? That is equal to C1 will remain intact. So C1 वैसे रहेगा. C2 जो है C2 से C1 माइनस किया तो आपको मान क्या आएगा? A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर x, गेट माइनस A स्क्वायर x. यहां से B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर x से B स्क्वायर कॉमन लिया तो B स्क्वायर x एंड 0. व्हाट हैपेंस टू द थर्ड कॉलम? माइनस A स्क्वायर x 0 एंड C स्क्वायर x. ठीक है? सो आप देख सकते हैं ना, सेकेंड कॉलम से मैं x कॉमन ले सकता हूं, थर्ड कॉलम से भी मैं x कॉमन ले सकता हूं. कॉमन लिया तो क्या आएगा? x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर 0 माइनस a स्क्वायर 0 c स्क्वायर. सो आप देख सकते हैं you get an x square common. So what is the meaning of this? This delta is divisible by x square. X square into something, so x square is a factor of this delta. So this delta is divisible by x square.
So option C is the right answer. Thank you.